ये सोच बदली हुई देख के बहुत खुशी महसूस होती है कि मेरे बच्चों के अंदर इतना बदलाव आ चुका है। टाइम पास के लिए ही आया था मैं, मुझे लगा कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ खेलना होगा, इधर जाने का उधर जाने का, घूमने मिलेगा। उससे पूरा लाइफ जो ऐसे बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट, पूरा लाइफ का टर्निंग ही हो गया। ரொம்ப என்னால வார்த்தையே இல்லை, அந்த அளவுக்கு எங்களை வந்து மாற்றி இருக்கிறாங்க. Having borne witness to malnutrition as an issue in these existing centers across India, Mondeleze International Foundation decided to reach out to the people as part of their CSR initiative. We've been in many of these locations for several decades, and what we felt is we wanted to give back to the communities in which we were operating. And that was the basic premise with which we started. And so we built a program which was pretty different from many programs around the world. Focus of the message was nutrition education. With an aim towards successful implementation of the program, Mondeleze International Foundation, along with Save the Children and Magic Bus India Foundation, formed a consortium in order to develop a unique delivery model. And so we decided to call it Shubh Aarambh. What better name could we go for? And it was indeed an auspicious beginning of new practices and the first strike toward ending many existing bad practices. Launched in June 2014, Shubh Aarambh focused on building up the immunity of the targeted population by improving health, nutrition and development status of the children, adolescents, pregnant and lactating mothers across the project locations. This project actually centers around how we can fix the nutrition problem in India along with the active lifestyle. We have to do something which brings a better healthy life. Nutrition education, active play, growing fresh foods. Pillars Shubh Aarambh adopted to counter to the undernourishment trends in the project locations. The interactions with the community people, with the mothers, the parents, the mapping of them. That was the first step which we did in 2014 beginning. The journey began with the states and the locales, where the implementing partners, knowing the knowledge about the masses and their functioning, were brought within the project, envisaging project success at the grassroots. In a country like India, with so many cultural diversities, food is not just a nutrition-sustaining factor. Rather, it is a way of life. It is not always the lack of variety of food that is available. It is the lack of awareness about what kind of food and also what kind of healthy, active lifestyle that children should have, the adolescents should have, and even young mothers should have. Mothers across the world have always been a key factor when it comes to strengthening the entire family as well as enforcing healthy eating habits. Realizing this, the project team sought mothers from these regions and began to provide them with aids to support their endeavor with trainings and several capacity building measures to a healthy lifestyle. The government frontline workers, Ashas, ANMs, Anganwadi workers, along with community health and nutrition workers of Shubh Aarambh, aided in successful progresses and linkages. हम तो ऐसे था जानकारी, लेकिन हमें और कुछ जानकारी मिली, ऐसे कि जैसे गर्भवती महिला डिलीवरी से पहले भी 4-5 जांच होनी चाहिए। 3 महीने के अंदर पेट में बच्चे को किस तरीके से आहार देना पड़ेगा, बच्चे को कैसे मिलता है, और साफ सफाई अच्छे से रखनी चाहिए बच्चे की। बच्चे लोग को भी क्या नाश्ता देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो बच्चे को सिखाते हुए भी हमारे शुभारंभ ने उन्हें डिश दिया।
कभी भी बाहर से आओ ना तो हाथ धोकर अपने घर के अंदर आना है, और जो भी चीज़ है फल फ्रूट सब्जियां धोकर ही खानी चाहिए, सब्जियों को हमेशा धोकर काटना चाहिए। शुभ आरंभ में आके मेरे को बहुत कुछ पता चला है जो मुझे पहले नहीं पता था। कि आपका तो हो गया, लेकिन आप किसी और को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। नसला बसतात आणि हेच पाणी जे तिला Innovative methods of communication have always been a key factor for successful information dissemination. Medium is as important as the message that is being put across, just as these characters were more than mere childhood stories brought to life. Cooking demonstrations, trainings and events related to promotion of nutritious recipe books ensured the participation of mothers are examples of more innovative ideas in the execution of the project. Even a small change in a humble space like a kitchen at home can illustrate tangible changes in the society. To ensure availability and affordability of required nutrient-rich food materials led to the idea of crafting kitchen gardens. சுபாரத்திலிருந்து காய்கறி எப்படி போடுறதுன்னு சொல்லி நிறைய சொல்லி கொடுத்தாங்க. 3 வருஷமாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறாங்க. விதைக போட்டு நாற்று நட்டுறதுலேருந்து தண்ணி ஊற்றுறதுலேருந்து பராமரிப்பு எல்லாம் சொன்னாங்க. இந்த மாதிரி நாங்களே களை எடுத்து நாங்களே தண்ணி ஊற்றி வளர்த்துற காய்கறி. Wherein the lands were once barren, neglected and idle. They were properly nurtured, watered and cared for by community members, individuals and students, transforming them to a pool of green patches. நம்மளே வளர்த்துறதுனால சத்து கத்திரிக்காய் எந்த காய்கறியாக இருந்தாலும் வீட்டில் போட்டு இந்த பூச்சி மருந்து இதெல்லாம் ஊற்றாமல் வீட்லேயே காய்கறி போட்டு எடுக்கிறது நல்ல சத்து, உடம்புக்கு நல்லது, குழந்தைகளுக்கு நல்லதுன்னு அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. Even at places where there were less sufficient spaces, collaborative efforts along with innovative methodologies such as bottle gardens led to sprouts of new hopes within these communities. Continued follow-up, timely aids from the Department of Horticulture and similar entities enhanced the expected impact. Each of these green leaves cradle history. Education is not limited to the meters of rhyme or formulae that a child learns within the walls of a classroom. Rather, it is defined by the traits and tenets upon which a child grows, also what they receive and perceive from their surroundings. Shubh Aarambh ensured that one of these tenets was that on sanitation and hygiene by simple practices such as hand washing being reinforced among children. स्वर्ण कार्यक्रम में चित्र बनाए हैं, उनको ही देख देख के सीखते रहते हैं, कुछ नहीं मिले तो, जैसे कि स्वर्ण कार्यक्रम ने उनको सिखाया है हैंड हाथ धोने के कैसे धोते हैं, कोई तो ऐसे फेंक दिया, इसलिए उनके हाथों में कीटाणु चले आते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं और उनके मम्मी पापा का रुपए खर्च होता है. A simple behavioral change could lead toward a healthy lifestyle. अरे नाव मेरी चली रे धीरे धीरे. Shubh Aarambh engaged community health and nutrition workers and youth mentors to supervise children group sessions led by discussion leaders and community youth leaders, respectively. சுபாரம் திட்டத்தில் இருக்கிறது வந்து நான் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். இதனால நிறைய யூஸ் வந்திருக்கு. எனக்குள்ளேயே நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு. நான் மட்டும் இல்லை, என்னால் பல பேர் இங்கே சுபாரம்பத்தினால பல பேர் பயனடைச்சிருக்கிறாங்க. जब से शुभारंभ में आया ना, तब से पूरा लाइफ जो ऐसे बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट, पूरा लाइफ का टर्निंग ही हो गया. No matter which culture you hail from, growing up is considered incomplete if one's child doesn't have physical pursuits like indulgence in outdoor games. Shubh Aarambh ensured that an atmosphere was created where children are encouraged to play, learn and grow. You have to ensure that the medium itself is providing messages, is providing information that can link to their day-to-day life in a method that they understand, in a language that they understand. And activities, sports, play, those are the things that they enjoy.
The creation of safe play spaces was aimed toward promoting active play sessions across communities with children between the age group of 7 and 14. These were not just games, rather a life-changing exercise. The project has already touched upon the lives of 34,334 mothers and 31,329 children across 5 locations in 4 states. Today, 3 years later, I look back, I remember my day in Malanpur. जब से शुभारंभ कार्यक्रम जड़ा है मोंडलेज कंपनी की तरफ से, तो लोगों में इतनी जागरूकता पैदा हुई है. And one thing which has really impressed me is the involvement of our youth champions. இங்கே வந்துட்டு என்னால் வந்துட்டு நான் வந்து என்றைக்குமே போல்டாக எங்கேயுமே பேச மாட்டேன். ஆனால் இவ்வளோ போல்டாக பேசுகிறேன்னா எனக்கு நினச்சா நான் இப்படியே ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இது நானான்னு கூட என்னால் நம்ப முடியல. When you go down to the Shubh Aarambh villages, the best feeling is to hear the stories of change that we've brought about in the lives of the children. எப்படி குழந்தைகளை வந்து கட்டுப்படுத்துறது, தன்மையப்படுத்துறது, நம்மால் இருக்கிறது எப்படி, எந்த வகையில் அவனை கவர முடியும், அப்படியெல்லாம் செய்தால் அவன் எப்படி பள்ளிக்கு தொடர்ச்சியாக வருவான். मेरे घर वाले भी चाहते हैं कि शुभारंभ कार्यक्रम इधर ही रहे. इतना अच्छा प्रयोग हम शुरू कर रहे हैं, तो यही मनसा भिंड जिले के कलेक्टर साहब ने व्यक्त की थी कि आप ये 5 गाँव में क्यों चला रहे हैं, इसको बढ़ाते क्यों नहीं. जब भी ये लोग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारे यहाँ से कभी मैं चला जाता हूँ या मैं जब किसी काम में बिजी हुआ तो डॉक्टर उद्गेटकर हैं, हमारे यहाँ BPM ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर है, जो आशा हैं, आंगनवाड़ी हैं, उनकी मदद से जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको बुलाते हैं, उनके लिए डे केयर NRC वाला सिस्टम है वो फॉलो करते हैं. मुझे भी उनकी ये सोच बदली हुई देख के बहुत खुशी महसूस होती है कि मेरे बच्चों के अंदर इतना बदलाव आ चुका है. जहाँ शुभारंभ की टीम खड़ी रहती है वहाँ ग्राम पंचायत, वहाँ के सरपंच हम उसके साथ बराबर खड़े रहते हैं. जितना उनको सहयोग होता है उतना हम सहयोग करते हैं. It goes without saying that the reason these small and impressionable hands are praying for a better tomorrow is because there are millions out there who prayed and came together for a better today for these children. For as they say, simple or great, every journey needs a beginning, a Shubh Aarambh. आपको मेरी तरफ से शुभारंभ. 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 इधर शुभारंभ. शुभारंभ. सभी को शुभारंभ. 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 शुभारंभ.